अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ डिस्कस करूँगी 30। तो शुरू करते हैं। डिफाइन 30 शॉर्ट कीज़ ऑफ एमएस एक्सेल। हेयर आर 30 कीबोर्ड शॉर्टकट्स कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी सेलेक्टेड सेल्स और कॉन्टेंट। कंट्रोल प्लस एक्स से कट सेलेक्टेड सेल्स और कॉन्टेंट। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कॉपीड और कट सेल्स और कंटेंट। कंट्रोल प्लस जेड अनडू द लास्ट एक्शन। ये जो है, जब आप इसे यूज़ करेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ पे आ जाएंगे। ये सिर्फ याद करने से ये नहीं दिमाग में बैठेंगे। कंट्रोल प्लस वाई रीडू द लास्ट एक्शन। कंट्रोल प्लस एस सेव द करंट वर्कबुक। Control plus V print the current workbook. Control plus A select all cells in the current worksheet. Control plus B apply or remove bold formatting. Control plus I apply or remove italic formatting. Control plus U apply or remove underline formatting. Control plus F open the find dialog box to search for specific content. Control plus H open the replace dialog box to find and replace specific content. Control plus N create a new workbook. Control plus O open an existing workbook. 16 पर है। Control plus W close the current workbook. Control plus page up switch to the previous worksheet. Control plus page down switch to the next worksheet. Control plus tab switch between open workbooks or worksheets. Control plus shift plus equal to insert a new row or column. Control plus डिलीट और फिर जो माइनस करना, डिलीट द सेलेक्टेड रो और कॉलम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये साइन जो होती है अप्लाई करेंसी फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेटिंग। F2 एडिट द सेलेक्टेड सेल। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। F5 गो टू अ स्पेसिफिक सेल और रेंज। F7 open the spelling dialog box to check spelling. Alt plus equal to auto sum the selected cells. Alt plus enter start a new line within a cell. Alt plus tab switch between open applications और windows। तो थैंक यू सो मच। यहीं तक थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।